नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गीकी योगिन। मेरा नाम वन्या है और मैं एक सर्टिफाइड अष्टांग योगा ट्रेनर हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज योर थायराइड बाय 5 सिंपल योगा पोस्चर्स। जी हाँ, थायराइड एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है और कैसे हम सिर्फ अपने न्यूट्रिशन को और अपने एक्सरसाइज रिजीम को कंट्रोल करके इसको मैनेज कर सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे आज। तो पहला पोस्चर जो बहुत ही इफेक्टिव है हमारे थायराइड को मैनेज करने के लिए, वो है दंडासना। आप ये समझिए कि हमारे थ्रोट में यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। पोस्चर्स करें जिससे हम इस ग्लैंड को स्टिमुलेट कर पाएं, हमारा जो थायराइड लेवल है वो हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने पैर इस तरह से सामने रख लें, अपने हाथों को अपने हिप्स के साइड में रखें, अपनी स्पाइन को आप एलोंगेट करें, अपने शोल्डर्स को पीछे पुश करें, अपनी चेस्ट को ओपन अप करें और अपनी चिन को आप नीचे की तरफ ड्रॉप कर दें टुवर्ड्स योर स्टर्नम। इस तरीके से आप फील करेंगे कि आपके जो थ्रोट है उसमें एक कंप्रेशन हो रहा है एंड यू विल कीप ब्रीदिंग नॉर्मली। दिस इज कॉल्ड एज द दंडासना। वी विल स्टे हियर फॉर 8 breaths. 1 4 5 6 7 8. Gently up. तो ये था हमारा दंडासना। The next posture that's very effective in managing thyroid is the सेतु बंधासन। इसके लिए आप अपने बैक पे ऐसे लेट जाएं और अपने हैंड्स को अपने हिप्स के साइड में ऐसे रखें and we are gonna lift our hips up by squeezing our glutes and we will feel a good compression on our throat. Let's begin for 8 counts. 1 down, 2 down, 3 down, 4 down, 5 down, inhale and up, exhale and down, 6 down, last 2, 7 and down, last 1, 8, and you stay here for 8 additional breaths. Get into your feet. Very nice. Down. Just hug your knees for a while and lovely. The third posture after the hip bridge is called as the Sarvangasana, also called as the shoulder stand. इसके लिए आप अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, अपने बैक को अपने हैंड से सपोर्ट करें and you take your legs up like this onto your shoulders. You can stay here for 8 breaths. 1 2 3 4 5 6 7 8. The fourth posture for managing thyroid is the Halasana or the Plough pose. इसके लिए आप अपने पैरों को ऐसे पीछे ले जाएं। 2 3 7 8. Which is very effective for managing thyroid is called as the Matsyasana. For Matsyasana, you bring your legs back,
You raise your upper body and place your crown down like this. You can place your hands on your thighs and we are going to stay here for 8 breaths. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And gently release your back and get up. So these were the 5 postures that are very effective in managing thyroid. मैंने आपको ये 8 breaths काउंट करके बताया, लेकिन आप अपने डेली रूटीन में इसको कम से कम 2 बार कर सकते हैं. So 8 breaths and 2 sets of such 5 postures would be very effective in managing your thyroid. अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. नमस्कार.